ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के अवसर पर ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर माह के अवसर पर कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मैक्स कैंसर के इलाज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन इसमें मरीजों ने अपनी यात्रा के बारे में बताया। लंबे समय पहले स्तन कैंसर पर बड़े चिकित्सकों ने भी 1970 के दशक के बाद से कैंसर के उपचार में मेडिकल से लेकर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी उपचार तकनीकों के बारे में जानकारी दी। इस साल की थीम है लिविंग बिहाइंड ब्रेस्ट कैंसर। इस अवसर पर डॉक्टर पी.के. जुल्का, प्रिंसिपल डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी मैक्स और कैंसर के इलाज did a study with the Italian Institute, where we found that in India we find a lump of 4 centimeter, whereas in Italy they find a lump of 4 millimeter. And they do the surgery followed by radiation if it is ER positive. So then give hormones. So then no need of chemotherapy. So you avoid certain things and the treatment is done faster, easier and less, discomfort. So that is why early detection, and they are cured for it. Cure rates are more than 90%. So that is why we stress on early detection. In the whole spectrum from more than 40 years, more than 40 years. I don't think anybody can match that experience, but I can only say that the whole spectrum has changed. In the last 32 years, which I have seen actively in oncology treatment, the whole spectrum has changed. Earlier on, we used to completely talk from surgical aspect only about mastectomies. The fear that breast cancer means breast is gone. That is completely changed. Today, almost 70% women, even those who present initially with locally advanced breast cancers, with the benefit of neoadjuvant chemotherapy, clip placement, better planning, understanding, and what I say is the teamwork. That you sit in the tumor board, the pathologist, the radiologist, medical, surgical, radiation, all 6 teams sit together and make a plan. That makes a huge difference. And that is where the whole spectrum is changed. So today in that subset also, we are able to offer breast conservation, and more importantly, more and more women are talking about it, keen about it. I remember early on, whenever we have a patient and even the person is suitable for conservation, when you start that conversation, the male people or whatever you say, the group which comes with the patient would say, lots of safety chahiye, just remove the breast, we don't want to take any chance. That conversation has changed, the attitude has changed. And today we actually discuss very freely, frankly, and talk about it. I think Dr. Julka mentioned very important point about screening and early detection. I think that is another area which I will emphasize, that nobody should miss that chance of knowing more, being your breast aware, and those who are above 50 at least should have annual mammography. So 2 days back I had this lady who is having regular mammography for last 20 years. उनको अभी एक छोटा सा लीजन पकड़ में आ गया. She has got, and that was biopsied. It is a 4 millimeter size DCIS, and she was very upset. डॉक्टर साहब क्या फायदा हुआ? 20 साल से कर रहे थे, फिर ये होना ही था, तो मैंने यही फायदा हुआ. 20 साल is not going to prevent it from happening. The fact that it is 4 millimeters, you would not have picked up otherwise, because people had the benefit of seeing a mammogram of last year, previous year, and they know that this is a new finding. So that is the thing which has happened. Now today we are all sure, I am sure and they are sure, 100% cure rate, what sir was saying just now, without any adjuvant chemotherapy, no treatment required, no substance required, just a lumpectomy and probably radiation in that area. That's it. And that also 4 weeks of quick radiation. So I'm just giving a perspective that what all is possible. Today it is possible to save more lives. It's almost 90% plus cure rates. Have the same quality of life in terms of breast image or going through the treatment. It's simpler and much more quicker. And nobody in the family is suffering because of all this. So we are all partners in this. And what our 2 brave ladies sitting here have done is that they have shown that this is what is possible.
I request all my patients to go out and tell 10 more people. Let's see, because of your involvement in the community, it is possible to have more people for screening early detection. The fear goes away. Each time we talk, the fear goes away. Cancer gets weaker the more we talk. If we hide, that becomes stronger and we get weaker. So we have to understand that thing, that communication and understanding is very critical to get the best practices out. So we are all here. Started my DM in medical oncology in 2008. Got married in 2009. 2009 में जब मैरिज होके आए तो मेरी वाइफ की बुआ ने मुझे फ़ोन किया है. I have been diagnosed with breast cancer. I already had a mastectomy. She had a HER2 positive disease. She said chemotherapy, and she was, and for all practical purposes, my first patient. But what that experience taught me is, while as doctors we are sitting on this side of the table, when you have people with this disease in your family, you also start thinking from the other side. And I think it's very important for me as a clinician to think of what all I can do to help my patient. So, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, 5 years hormone therapy versus longer duration. There are standard guidelines available everywhere. We know statistics की ये standard चीज़ है और वो उसको follow करना बहुत आसान है. I think increasingly we have to think beyond standard. You know, what new can I bring in? How better than standard treatment can be offered, and I think increasingly, and Dr. Julka will agree, we are incorporating things like precision oncology. We are doing, testing like next generation sequencing. We are thinking of, how to involve immunotherapy, target therapy, etc. over and above the standard treatment. What else can be done? The other thing is the tolerability of treatment, and I think we have to be very conscious that how each and individual patient is taking the treatment. What can we do to reduce side effects? And increasingly, I think we are moving towards giving more and more 66 वर्षीय महिला सुचेता सचदेव ने अपने 27 सालों की यात्रा के बारे में बताया. तो मैं इमीडिएट मेजर ऑपरेशन करना हुआ, मेरी साइड में हो गया और उसमें मैं ये सर्जरी देने के बाद मेरा ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ. डॉक्टर डॉक्टर साहब के अंदर इसमें दिखाया कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कैंसर का 6 साल की कीमोथेरेपी और रेडिएशन और उनका प्रोसेस था. जैसे आपको नहीं हो गया बताया उन्होंने. जब हम यहाँ पहुँचे इनके पास आए तो उन्होंने बोला ब्रेस्ट रिमूव की ज़रूरत नहीं थी. उस समय भी ये चीज़ें चल रही थी. डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जब योग के लिए जाती थी, मेरे की साइड वाले पेशेंट पे इनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो वही दे रहे थे, डायरेक्ट दे रहे थे मेडिसिन. उस समय भी दे रहे थे. तो मेरा हो चुका था मरीचन जैसे. तो सिचुएशन ऐसी थी कि उन्होंने कहा हमने ऑपरेशन किया, ये फैल जाएगा, तो रिस्क नहीं लेते. ये डॉक्टर का नाम तो नहीं, डॉक्टर मैथ्यू. हाँ, डॉक्टर मैथ्यू थे. हाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हमने ये नेशनल कैंसर प्रोग्राम में कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भी वो करना चाहिए कि सो दैट दे शुड ऑल्सो रिपोर्ट केसेस. ओवरऑल तो ब्रेस्ट कैंसर रेट है वो बढ़ रहा है 2% के रेट, 2% पर ईयर बढ़ रहा है. चेंज हुआ, ग्लोबली भी चेंज हुआ, मतलब इंडिया में भी चेंज हुआ, इंडियन गवर्नमेंट सेटअप में भी चेंज हुआ. सो अर्लियर वी यूज्ड टू से 80% were advanced stages and 20% were relatively early stage. Early means stage 1 and 2, advanced means 3 and 4. Today the approximate is about 60% advanced and 40% early. So there's a significant shift. In fact, there's a study on average lump size at presentation. They have said that in 90s the average lump size presentation was about 4.5 centimeters. Today it is about 2 centimeters. So that is all thanks to media, thanks to awareness, availability of information on various digital channels, which makes it possible for people to understand and reach out to doctors. Dr. David, I'm just very curious. How do you see patients? Because there's still an inhibition in women's we're looking at in mammography. Yeah, so as Dr. Julka was saying, there's a lot of emphasis on screening the appropriate population, and then letting people know that you are the appropriate population. So जैसे हमने पूछा था कि what are we doing? So I think we are coming out with videos which we are going to post on YouTube. They will talk about how to do a breast self-examination, how frequently to do a breast self-examination, what is mammography, how frequently to do a mammography, where can a mammography happen, and what are the implications of findings on a mammography. As of now, mammography remains the
main test for breast cancer screening. But the discomfort of So there is a little bit of discomfort, yes. There's also some concern about the radiation of, radiation exposure. But I think broadly we understand that beyond the age of 50, guidelines vary. Some suggest mammogram once a year, some suggest twice a year. But beyond the age of 50, once in 2 years. So beyond the age of 50, we understand that the overall benefit of getting a mammography will exceed the minimal radiation exposure that there may be because of the test. In fact, in the West, they have 85 to 90% patients presenting with stage 1 and stage 2. And the reason is mammography. They do mammography, it's a routine thing, they don't question it. Unfortunately, in India, mammography is not a routine, but in the South Delhi population, predominantly, when we look at it, women are aware, they are getting mammograms, and that's why increasingly we are seeing tumors which are 4, 5, 3 millimeter, 7 millimeter in size. And सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरित चतुर्वेदी, कैंसर सर्जन। डॉक्टर साहब, कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर क्या जागरूकता बढ़ा रहे हैं, तो पहले इसके बारे में बताइए और क्या क्या ब्रेस्ट कैंसर आज की तारीख में महिलाओं में सबसे ज़्यादा फैला हुआ कैंसर है, और ये फॉर्चुनेटली ऐसा कैंसर है जिसको कि अर्ली डिटेक्शन किया जाता है, उसमें क्योर रेट बहुत बढ़ चुका है। तो हम ये चाहते हैं इस अवेयरनेस के माध्यम से कि हम जितनी जानें बचा सकें, जितनी लोगों की लाइफ बेटर कर सकें, उसको कर पाएँ। और उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, अपनी ब्रेस्ट के बारे में समझना, जैसे कहते हैं ब्रेस्ट अवेयरनेस। हमें पता हो कोई चेंज आया है, कोई लंप आया है, कोई निपल डिस्चार्ज है, कोई कलर चेंज हुआ है स्किन पे, उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो। और जो 50 साल के ऊपर की महिलाएं हैं वो रेगुलर एनुअल मैमोग्राफी कराएं। ये 2 सिंपल टेस्ट करने से हम शायद 3 गुना ज़्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे, क्योंकि आजकल जितनी इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर से मोर्टेलिटी होती है, उसकी 1/3 से कम मोर्टेलिटी होती है डेवलप्ड कंट्रीज में। द ओनली डिफरेंस इज़ कि वहाँ पे वो लोग ज़्यादा स्क्रीनिंग करते हैं, ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन करते हैं, स्टेज 1 और 2 में कैंसर पकड़ते हैं और क्योर रेट बढ़ जाता है। सो दैट इज़। इससे बचने के लिए क्या क्या सतर्कता बरतनी है? बचने का जो प्रिवेंशन की आप बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन में हम लोग कहते हैं 2-3 चीज़ें। एक तो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। मॉडिफाइबल मतलब कि हम वो क्या कर सकते हैं जिससे बच पाएँ। तो जो आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कैंसर रेट बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर रेट बढ़ रहा है। और लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें हैं? खान पान, लाइफस्टाइल। खान पान में फैट कंजम्पशन ज़्यादा है, हम लोग की डाइट में हेल्दी फाइबर डाइट कम हो गई है, वेजिटेबल्स कम हो गए हैं और वेट बढ़ गया है। जो BMI बढ़ जाता है उससे ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, गाड़ी में बैठे दफ्तर में बैठे लैपटॉप पे लगे हुए हैं, फिर आ गए, तो इन सब चीज़ों का नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरा लेडीज़ के लिए डिलेड प्रेगनेंसी और नो प्रेगनेंसी, उसका भी एक बॉडी पे होता है, क्योंकि जो विद एवरी पीरियड जो ईस्ट्रोजन साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो मैच होता है। जब वो प्रेगनेंसी होती है तो वो जो इंटरप्शन होता है दैट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है। तो वो चीज़ जितना डिले होगा या नहीं होगा उससे ब्रेस्ट कैंसर रेट बढ़ जाता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन एक्सपोजर बढ़ जाता है ब्रेस्ट। क्या आपका जो महिलाओं में बच्चा होने का जो समय है वो हर समय क्या प्रेफरेबली 30 के पहले। देखो, हमें ये बात वैसे ही समझनी चाहिए और कहनी चाहिए कि हर समाज में हर समय पे अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, उनकी बहुत सारी वजहें होती हैं। आप एक चीज़ को आइसोलेशन में सॉल्व नहीं कर सकते। टुडे इट इज़ हेल्दी दैट वीमेन आर कम्पीटिंग इन द वर्क प्लेस, इट इज़ हेल्दी दैट दे हैव अ वॉइस। जैसे आपको ही बता रहा था ना